Guys, so today's video is all about a conversation which I was having with one of the consulting calls. Obviously, the lady won't be shown due to privacy reasons. You'll be able to listen to the voice in the background while I'm in the car. I was actually going to a meeting and then it was time for me to take that consultation call. And that's the reason why I just pulled my car on the road. And in the middle of the road, I was just taking this consulting call for around like 15 minutes, out of which a 10-minute conversation I'm putting up over here as a YouTube video. Make sure you learn from this. There are 2 to 3 important points which you should be learning. Number one thing is when you buy a course, what you should be doing. Number two is how to actually learn WordPress in 2021 if you're planning to build a WordPress website for yourself without buying any course. Number three is if you're trying to write a book in 2021, then how you should be promoting your book in this 2021 modern digital age by not just doing Facebook ads and not just waiting for you to actually just launch your book and then doing Facebook and Instagram ads. This is beyond that. How to actually how to prepare yourself pre-launch as well for your pre-order so that you can just be able to generate lakhs of rupees in revenue from your book pre-orders. All right. So hope you enjoy this video. If you do give me a thumbs up. I've just once again become active on YouTube, so make sure you subscribe to my channel if you're finding it valuable and turn on the bell notification. Every single day 1 p.m. IST new video comes in over here. At times I just randomly upload at 1 p.m. I just schedule, or most of the times I do a premiere, so you'll get a notification for premieres as well. And now to the episode right after this intro. Can you hear me? Yes. All right, perfect. So you are a writer and you want to do, you want to promote it. Have you written the book? Yes, I'm working on it. Okay, you're working on it. All right. So Yeah. cool. So see, with respect to the books, current trend of promoting the book in advance would be like start approaching all the influencers in the segment where you are writing the book. If it is in management, try to approach all the business people and all, and try to interview them on their podcast or on your podcast. So that is known as like book travel. This is something known as in digital world. This is known as book travel, virtual tour. You are on a virtual tour as an author who is trying to promote the book. This usually happens post you have the book and it is available for the pre-orders and orders. But you can start doing this while you're writing the book as well, without you promoting the book, so that that word goes out. And once you have the book, which is available for pre-orders and everything, then you can go and approach people, shoot out emails to all the influencers and DMs to all the influencers, LinkedIn influencers, everyone. Try to just tell them that, hey, I have this book upcoming and it is ready for pre-order. I would love to empower your audience. So I would love to be a guest on your podcast. Let me know if that is possible. So out of 1,000, maybe you might get 50 yes, based on your current level of influence. If you have influence, if you don't have influence, so based on that you will get 50 yeses. And if you are on 50 podcasts, then just imagine, out of those 50 guests, if 50 people have 10,000 loyal people who are listening to them, then 15 to 10,000 is 50,000 people listening to your book promotion. And then they, out of that 50,000 people, even if you have 10% conversion, so that comes down to 5,000 people buying your book at that point in time when you have your book. And 5,000 into, if your book cost is, let's say 200, or let's say 500, let's pick 500. So 500 into 500, that is like close to 2,50,000 rupees in just like on the pre-order. So that is how you go about. If I was writing a book right now in 2021, this is how I would approach. I would start doing any which ways I have a podcast, so I would just keep doing that. And then once I have my book, I'll start my virtual tour, or I would call it as a virtual book tour, and I will try to be a guest on other people's podcast as well. और अगर मैं एज अ वर्डप्रेस जो है ब्लॉग वगैरह लिखना शुरू करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?
Start working on WordPress blogs. नहीं, Start आई writing on that. आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली मैं जो है इसमें बिल्कुल जीरो हूँ. आई डोंट नो अबाउट वर्डप्रेस, और तो वेबसाइट वगैरह मतलब डिजाइन वगैरह करवा के एंड No. I mean, YouTube पे सीख सकते हो आप. There is a site, अगर आप लिख सकते हो तो just write one name. There is a guy called Tyler Moore, or you can just visit tyler.com. tyler.com. ओके. Tyler.com आप जाओगे. He's teaching WordPress for free since past 12 years, I suppose. All right. And he gives away free tutorials every single day. Then second resource which I'll give you is wpbeginner.com, जो कि one of the oldest resources of WordPress blogs है. So try to refer to that as well. WordPress सीखने के लिए कोई कोर्स नहीं लेगा, सब YouTube पे है. ठीक है. So start learning that. That's it. All you need is step number 1, you need a domain name. Step number 2, you need hosting. Step number 3, you need to change the DNS. Step number 4, you need to install WordPress. And that's it. तो ये सारी एंड प्रोसीजर ये सब है ना, सारे यूट्यूब पे मिलता है आपको फ्री में, तो कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट जो राइट हाउ टू डोमेन क्रिएट वगैरह वेबसाइट ऑन चाहिएगा वो वर्डप्रेस. गोडैडी से ही ले सकते हैं या अदर कोई बेस्ट कोई भी प्लेस है? प्लेटफॉर्म, कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं होता है, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं. I started with GoDaddy. I am now shifted to Namecheap. तो मेरे सारे ही डोमेन्स Namecheap से है. अगर आपको चाहिए तो digitalpratik.com/Namecheap मेरा affiliate link है. So you can use that if you want to go ahead with Namecheap. Then hosting के लिए I am using Bluehost since past 2.5 years, and I'm completely okay with that. I don't find any difficulties with Bluehost as of now, so I'm using that. That's it. और सर मैंने एक्चुअली आपका जो कोर्स है वो भी परचेज किया था, और उसमें क्या है मतलब आपने Course of. कुछ पॉडकास्टिंग अभी मैंने वो शुरू नहीं किया है लर्न करना, परचेज किया था. और तो मतलब वो तो आउटडेटेड हो जाएगा. दैट्स द प्रॉब्लम. पीपल बाय नहीं, कोर्सेज बट देन दे डोंट अप्लाई. एक्चुअली सर मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो जो है राइटिंग का था. तो उस टाइम तक मतलब मेरे माइंड में नहीं आया था कि मैं पॉडकास्ट शुरू कैसे करूं, और उस टाइम में जो है मतलब मेरी सिचुएशन वैसी नहीं थी कि मैं जो है ऑनलाइन कुछ वर्किंग कर पाऊँ. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच. जो आपकी स्माइली वाली डीपी है उसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आ गए थे. मैं आपको लास्ट 2 and 3 ईयर से फॉलो कर रही हूँ, और मतलब आपका जो वो डीपी एंड आपके जो अपडेट्स है वो देख के ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती थी, पॉजिटिव थिंक आती थी, जिसकी वजह से मतलब मैंने खुद जो है डिजिटल वर्ल्ड में जो है काम करने का मतलब सोचा, और उसमें थोड़ा बहुत एफर्ट कर रही हूँ. अब उसी में जो है आगे करियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ. कूल इनफ. कूल इनफ. मैं जस्ट ये पूछना चाहती थी, जो आपका ये माइटवे जो वो है ऐप है आपने रिकमेंड किया हुआ है, कौन सा है? आई थिंक माइटवे नाम से है या मिगवे कुछ ऐसा होगा. आई मैंने डोंट ऐसा कोई ऐप रिमेम्बर. किसके नहीं, रिगार्डिंग आप मतलब? डिजिटल एम्पायर लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग आई थिंक. माइटी नेटवर्क्स. मे बी मुझे नाम याद नहीं है प्रॉपर. तो मैंने उसे ओपन किया था लेकिन मेरे को वो समझ में नहीं आया उसको वर्किंग कैसे करना है. मतलब आप किस कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो वही मुझे पता नहीं चल रहा है, तो हाउ विल आई बी एबल टू हेल्प यू? आपने उसी का बताया था डिजिटल लाइफस्टाइल, जो एम्पायर है उसका जो ऐप था, मतलब उसे डाउनलोड करके उस पे लॉगिन करके अपना अकाउंट बना के, और उस पे वीडियोस वगैरह डालने का कुछ था. I mean, honestly, I would be able to help you if you tell me the app, because I keep on talking a lot of things in digital space. So मैंने कब क्या बोला होगा मुझे तो ऐसा याद नहीं रहेगा ना. तो आप अगर इट्स exactly मेरे को ओके, मे बताओगे बी. तो कोई मैं. एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लो मुझे शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं, तो अभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से रहेंगे 2-3 जिन पे मैं रेगुलर वीडियोस अपडेट कर सकूँ? YouTube. उसके अलावा यूट्यूब सबको पता है. शॉर्ट Then why are वीडियोस you इन not अ doing it? Why are you not doing it? आई एम स्टार्टिंग ऑन इट. एक्चुअली मैंने अभी जो है इंस्टा पे शुरू किए हैं वीडियोस डालना. नहीं, मैंने क्या बोला? आपने मेरे को पूछा 2-3 प्लेटफॉर्म बताओ, मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बताया, आपको वो मालूम है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो.
तो मैं अगर उसमें जो दूसरा है और सर तीसरा भी एटलीस्ट बताऊंगा, मैं जो दूसरा नहीं नहीं, अभी आप जो सुनो, जी, दूसरा और तीसरा भी मैं जब बताऊंगा तो उस जी, पे भी आप नहीं करोगे। मुझे मालूम है, जैसे आपने मेरा कोर्स पिछले साल लिया, मेरा कोर्स जून में लॉन्च हुआ, जून में आपने कोर्स लिया, ये जनवरी 2021 है, 7 महीना हो गया, 7 महीने में आपने कोर्स शुरू भी नहीं किया है। दिस इज द पॉइंट शिवू, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल द यंगस्टर्स या बहुत सारे एल्डर्स भी जो होते हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, that they try to get fantasized with the things which we guys are doing or somebody else is doing. They see that life and they try to grasp on that, but because of some or the other reasons they are not able to do that. Then they try to figure out the new things, but then what about the old things? ठीक है, so मतलब जब तक आप करोगे, आप अभी कितना सारा करना चाहते हो, लेकिन किसी एक में तो स्टार्ट करो। आप बुक लिख रहे हो या जो भी आप राइटिंग कर रहे हो, I don't know how you will be able to do that. I have given you a complete picture of you making lakhs of rupees out of that book, जी, but I don't know how seriously you will implement upon that. Second, when you asked about the video platforms, I'm telling you, YouTube is, I mean, why do you think I am once again getting active on YouTube every single day? Why do you think? Because it is important. ठीक है, राइट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम एबल टू डू दैट. सो जस्ट लाइक गैरी वेनरचक जो इतने साल से बोल रहे हैं कि वॉच व्हाट आई एम डूइंग, वॉच व्हाट आई एम डूइंग, आई गेस आई विल हैव टू स्टार्ट टेलिंग टू माय इंडियन ऑडियंस, एटलीस्ट जो भी कुछ 1% जितना ऑडियंस मेरा होगा एज कंपेयर टू व्हाट गैरी वेनरचक सर जी है, ठीक है, उनके कंपैरिजन में, मतलब जो भी मेरा ऑडियंस है उनको यही मैं बताना चाहता हूँ, वॉच व्हाट आई एम डूइंग. मैं एवे ही कुछ चालू नहीं कर देता हूँ, मैं पागल तो थोड़ी हूँ कि मैं ऐसे ही कुछ स्टार्ट कर दूंगा. ठीक नहीं है, सर मैंने भी ऐसे स्टार्ट नहीं किया है, जो राइटिंग एग्जैक्टली. है वो मेरा पैशन है और सो बुक जस्ट मेरी कीप लगभग कीप ऑन कंप्लीट हो होल्ड ऑन चुकी है। दैट. Keep an hold on that. Writing, if it is your passion, start talking about your writing, start talking about your life journey, start talking about your problems, struggles, everything in the piece of video, which is YouTube as the macro form. And if you want to think of micro video, then try to do it on Instagram reels. अभी रातों रात आपको कुछ वायरलिटी नहीं मिलने वाला, because then you will have to be good enough in speaking, good enough in communicating, good enough in just connecting with audience's emotions, good enough in you actually speaking sense to people with respect to writing things, because there are a lot of writers out there who are trying to speak. Okay, so all of these things matter. At the end of the day, you have to be good enough in what you're doing right now and then connect with your audience. Varna, how you will be able to stand out from the crowd? ठीक है ना? थैंक यू सो मच।